जैसा कि आप जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम काफी नजदीक है और आपको करना है कम समय में अधिक तैयारी, ताकि एग्जाम में आपकी कोई नहीं रहे लाचारी और दूर हो जाए आपकी एग्जाम फियर की बीमारी। तो इसी फियर को दूर करने के लिए प्रीवियस 10 इयर्स के क्वेश्चन बैंक का सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो 6 पार्ट में कंप्लीट होगी। और इन 6 पार्ट्स में चैप्टर वाइज जितने सारे क्वेश्चंस प्रीवियस 10 से पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो सीरीज होगा, इन सारे सीरीज को हम लोग कंप्लीट करेंगे 6 पार्ट में, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा। तो इसे रिवाइज करेंगे और बने रहेंगे हिस्ट्री बाय एसआरबी के साथ में। तो आइए शुरू करते हैं। ऑल द क्वेश्चन दैट हैड बीन ऑलरेडी आस्क्ड इन प्रीवियस 10 इयर्स। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग स्टार्ट करेंगे द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप और नेशनलिज्म इन इंडिया। इन दो चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे 10 इयर्स में पूछे गए जो क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यू कैन सी हियर फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि डिस्क्राइब द explosive condition prevailed in Balkans after 1871 in Europe. So this question had been asked in 2018 and you can see the question answer also here, question along with the answer. So you can take a screenshot or pause the video and you can write down and see the answer. Next question है कि describe any 5 measures introduced by the French revolutionaries to create a sense of collective identity amongst the French people. यानी कि फ्रेंच पीपल के लोगों के बीच में कौन से ऐसे 5 स्टेप्स लिए गए, कौन से ऐसे मेजर्स इंट्रोड्यूस किए जिससे कि फ्रेंच रेवोल्यूशनरी के बीच में सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी यानी सामूहिक पहचान को क्रिएट किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ डिड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट विथ पार्टिसिपेशन ऑफ मिडिल क्लास पीपल इन द सिटीज़, एक्सप्लेन इट्स इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट। यानी कि सिटीज़ में मिडिल क्लास के लोगों ने जब पार्टिसिपेट किया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, तो किस प्रकार से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सिटीज़ में यानी कि नगरों में हुआ और इसका इकोनॉमिक फ्रंट में क्या प्रभाव पड़ा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाई वाज कांग्रेस रिलक्टेंट टू अलाउ वुमेन टू होल्ड एनी पोजीशन ऑफ अथॉरिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पूछा गया कि आखिर महिलाओं को कोई पोजीशन ऑर्गेनाइजेशन में कोई पोजीशन देने में कांग्रेस क्यों हिचकिचाती रही। और यहाँ पर सेकंड पार्ट में पूछा गया है कि हाउ डिड वुमेन पार्टिसिपेट इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो यहाँ पर जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुई थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यहाँ पर इस मूवमेंट में महिलाओं ने किस प्रकार से पार्टिसिपेट किया और उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा, क्या योगदान रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाई डिड गांधी जी डिसाइड टू लॉन्च अ नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रपोज्ड रॉलेट एक्ट 1919 एंड हाउ वाज इट अपोज्ड। यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन कि व्हाई डिड गांधी जी डिसाइड टू लॉन्च अ नेशन वाइड सत्याग्रह, यानी कि पूरे राष्ट्रव्यापी तरीके से गांधी जी ने एक नेशनल लेवल पर एक सत्याग्रह मूवमेंट को लॉन्च करना चाहते थे। तो ऐसा क्यों चाहते थे, जो रॉलेट एक्ट के खिलाफ में चाहते थे, एंड हाउ वाज इट अपोज्ड और इसका विरोध किस प्रकार से किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाई वाज द सॉल्ट मार्च कंसिडर्ड एन इफेक्टिव सिंबल ऑफ रेसिस्टेंस अगेंस्ट कॉलोनिज्म, एक्सप्लेन। यानी कि यहाँ पर पूछा गया है कि कॉलोनिज्म जो गवर्नमेंट थी यानी कि जो ब्रिटिश की गवर्नमेंट थी, तो उसके खिलाफ में एक इफेक्टिव जो मूवमेंट था, इफेक्टिव मूवमेंट साबित हुआ साल्ट मार्च। तो ये कैसे किस प्रकार से साबित हुआ एक इफेक्टिव मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो ब्रिटिश के खिलाफ में एक इफेक्टिव एक सिंबल था साल्ट मार्च। तो ये कैसे हुआ और क्यों हुआ, तो इसी को आपको एक्सप्लेन करनी है। यू कैन सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हियर। Now next question from civics first chapter power sharing. The first question here is differentiate between community government in Belgium and majoritarian government in Sri Lanka. Next question कि after independence Sri Lanka witnessed the supremacy of which community? This is objective question and you can see the answer here. That is after independence in 1948 Sri Lanka witnessed the supremacy of Sinhala community. And now next question, do you think that the steps taken by Sri Lankan government to establish the supremacy of Sinhala were justified, be long lasting? Give your viewpoint. So answer you can see here. Next question, sharing of powers make a country more powerful and united. Justify this statement. Next question, describe any 3 majoritarian measures taken by the Sri Lankan government to establish Sinhala supremacy. Next one, bring out any 2 sharp contrast between Belgium and Sri Lankan democracies. Next question, what is the official religion of Sri Lanka? And that is Buddhism. Answer is Buddhism. Next question, explain any 3 ways by which Belgium has accommodated the existing
regional differences and cultural diversities. Next question. Sharing of powers makes a country more powerful and united. Do you agree with the statement? Why? Next question. Highlight the measures adopted by the Belgium Constitution for the prevention of conflicts in Belgium. Next question. Explain two reasons as to why power sharing is desirable. This question is also very important question. Many times this question had been already asked in previous exams. Now next question. Describe any three provisions of amendment made in Indian Constitution in 1992 for making three-tier government more effective and powerful. This question is also very important. Next question. Under which type of federation India comes? Mention any two features of such federation. Next question. This is a objective question. How many seats are reserved for women in the local bodies in India? Answer will be 1/3. Next question. What other factors besides politics keep the federations united? Next question. Explain the vertical division of power giving example from India, or explain the vertical division of power sharing example from India. Next question. Explain democratic policies adopted by Government of India which made it a successful federation. Next question, objective question. What is the official post for the chairperson of a municipal corporation? And the answer is mayor. Next question. Compare the federations of coming together type and holding together type. Next question. How are the legislative powers divided between the union government and the state governments? Next question. Which five provisions of Indian Constitution make India a full-fledged federation? Next question. What is federalism? Distinguish between the federations of come together type and hold together type. Mention two countries each for both the types of federations. Next question. The creation of linguistic states was the first and the major test of democratic politics in our country. Justify this statement. Next question from political parties, and the first question is that describe any five major functions of political parties performed in a democracy. And second question is that describe the importance of regional political parties in strengthening democracy. Next question from chapter number 7, outcomes of democracy, and the question is democracy stands much superior to any other form of government in promoting dignity and freedom of the individual. Justify this statement. Next question. Democracies lead to peaceful and harmonious life among citizens. And now next question from geography section, chapter number 1, resources and development. The first is an objective question here. The question is classify resources on the basis of origin. And you can see the answer also. On the basis of origin, resources can be classified as biotic and abiotic. Next question is that classify resources on the basis of exhaustibility. Answer is that the resources on the basis of exhaustibility can be classified into renewable and non-renewable resources. Next question for 3 marks. Examine the 3 major problems created as a result of indiscriminate utilization of natural resources. Now next question is that mention any 3 features of arid soil. Next question, what is rigor soil, and write its 2 features. Mention 2 regions where they are found. Next question from this chapter, indiscriminate use of natural resources has led the numerous problems. Justify this statement. Next question, how can you contribute to minimize the pollution? Explain. Next one, land is a natural resource of utmost importance. Justify this statement with appropriate arguments. Next one, name the soil type which is widely found in western Rajasthan. Explain 2 important characteristics of this type of soil type which make it unsuitable for cultivation. Next question,
distinguish between red and laterite soils, stating 5 points of distinction. Next one, in India, some regions are rich in certain types of resources but deficient in some other resources. Do you agree with the statement? Support your answer with 3 examples. And next one, 33% area should be under forest. Justify the statement highlighting the environmental values of forest. Next one, mention any 2 human activities which are responsible for the process of soil erosion. Explain the 2 types of soil erosion mostly observed in India. Next one, describe any 3 measures of controlling land degradation. Next one, for 5 marks, mention 3 physical factors as well as 3 human factors which determine the use of land in India. Next question from 2011 exam, and the question is that explain the importance of conservation of resources. Next one, explain the role of humans in resource development. And next one, distinguish between national and international resources by giving 3 points. So this is the last question of this question bank series part 1, and thanks for being with History by SRB. Okay, all of you, have a nice day. Jai Hind, Jai Bharat.